House sparrow is a small bird, but it has played a big and important role in maintaining a balance in the environment. These birds feed on pests that damage crops like alpha and catworms, besides insects that are born during the monsoon season, thus reducing the impact of many vector-borne diseases. But what seemed like an abundance still not long ago has gone down significantly over the past few years, especially in urban areas where the population of sparrows has declined dramatically. The main reason behind this seems to be a disproportionate increase in the number of concrete houses and buildings that have taken over the living spaces of sparrows and dwindled their food resources. The problem is a global one. That is why World Sparrow Day is observed on 20th March every year to pledge the protection of these birds. There are several organizations and nature lovers who are also carrying out a number of different campaigns to save the sparrow in urban areas. टीचर्स को ट्रेन करते हैं हम लोग एनवायरनमेंट एजुकेशन एक्टिविटी बेस के ऊपर। हम लोग थिएटर करते हैं, इको थिएटर बच्चों के साथ स्कूल्स के अंदर हम डिज़ाइन करते हैं, वाटर कंजर्वेशन पे काम करते हैं, तालाबों का पुनर्जीवन करते हैं उनको, तालाबों को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं स्कूलों के अंदर। लेकिन हमने जो मेन काम रखा है वो थिएटर, नेस्ट और एजुकेशन है एनवायरनमेंट की। हम लोग नेचर ट्रेल करवाते हैं बच्चों को, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को भी, स्कूल के बच्चों को भी, स्कूल्स में जाके वर्कशॉप करते हैं। तो इसी किस्म के काम करते हैं जिससे अवेयरनेस बढ़े और वो बच्चे समझें कि हमारे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। Environmentalist Rakesh Khatri, also known as the Nest Man of India, has been campaigning to save the sparrow for the last decade. His organization, Eco Roots Foundation, holds various programs in urban societies and schools to create awareness. The aim is to sensitize people, and especially the new generation, about the environment and the other living organisms. Rakesh Khatri also teaches children how to build different types of nests. So far, he has made more than 1 lakh nests all over the country. These eco-friendly nests not only thrill children, but are also providing suitable habitats for small birds like the sparrows. तो मुझे लगता है इस चिड़िया को बचाना बहुत ज़रूरी था और मैंने उस मुहिम को लेकर जब चला तो हमने घोंसलों का काफ़ी R&D करके, पहले नारियल से बनाते थे वो नहीं चला, फिर गत्ते के डिब्बों से बनाए वो नहीं चले, फिर ये बेंत की डंडियों से R&D करके घोंसले का जो मॉडल बनाया ये इतना सक्सेस हुआ कि ये चलता ही चला गया। इसमें सिर्फ एक लोहे की चूड़ी को छोड़ के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन वो चूड़ी भी कवर होती है तो उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचता। सारा सामान इको फ्रेंडली है। Due to the efforts of these self-help organizations and environmentalists, there has been a clear change in the society. Children and elders alike are engaging in conservation of sparrow and other small birds and are becoming aware of their role in the environment. ये बर्ड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इसको अगर स्टेट बर्ड का दर्जा भी दिया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बहुत प्यारी है, छोटी सी है, हमारे घर का हिस्सा थी। ये चिड़िया अपनी छोटी छोटी चोंच से बहुत बड़े बड़े काम करती है, जैसे कि पॉलिनेशन का काम। पॉलिनेशन मतलब एक फूल से दूसरे फूल तक उनको पॉलिनेट करने का काम, जिससे कि वो ब्रीड बढ़ती है। I was very fascinated by sparrows when I first saw them about like 4 years ago, and they're actually pretty rare over here in Delhi. We don't usually see them. So I saw them today over here, and these nests I believe would help us to make that species back to like normal so that their population can increase. To conserve the sparrow and its habitat, it is important that we keep grains and water outdoors, plant as many trees as possible, and maintain their habitat. Programs such as construction of artificial nests and conservation training by Rakesh Khatri and his organization are the right initiative in this direction.